बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। तो व्यूअर्स, हम मैथमेटिकल मेथड्स का चैप्टर 9 जो है उसे हम देख रहे थे। इसका टाइटल था फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस। हमने इस चैप्टर की पहली 3 एक्सरसाइजेस डिस्कस की, जिसका रिव्यू मैं इन शॉर्ट आप लोगों को देता हूँ। हमने देखा डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, फिर हमने देखा कि डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते कैसे हैं, फिर हमने देखा कि डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है। ये 3 चीज़ें देखने के बाद फिर हमने जो डिफरेंट टाइप्स हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस की वो देखी, और उनमें सबसे पहले हमारे पास जो टाइप आई वो थी हमारे पास सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन। उसमें हमने सिंपली क्या किया, वेरिएबल्स को सेपरेट करके हमने इंटीग्रेट किया। दूसरी जो हमारे पास टाइप आई वो थी नॉन सेपरेबल बट रेड्यूसिबल टू सेपरेबल। अब उसमें फिर हमने देखा होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है फर्स्ट ऑर्डर। उस होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को डिफाइन करने के बाद हमने उसके सॉल्यूशन के लिए हमने सब्स्टिट्यूशन की। उस सब्स्टिट्यूशन में हमने उस होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट किया। फिर सेपरेबल जब बन गई, वेरिएबल्स को इंटीग्रेट करने के बाद हमने सॉल्यूशन निकाला और दोबारा से हमने जो है वो सब्स्टिट्यूशन की, सो दैट जो हमारे पास इनिशियल वेरिएबल्स थे वो वापस आ गए। फिर हमारे पास जो तीसरी टाइप थी वो हमारे पास थी नॉन होमोजीनियस बट रेड्यूसिबल टू होमोजीनियस। ये सबसे लेंथी क्वेश्चंस थे। ये आप एक्सरसाइज 9.3 के मेरे जो लेक्चर्स हैं मेरे चैनल पे, उसे आप डिटेल में जाके देख सकते हैं। तो नॉन होमोजीनियस को हमने पहले होमोजीनियस में कन्वर्ट किया, होमोजीनियस के बाद फिर वो सेपरेबल जब बन गई तो फिर हमने उसका सॉल्यूशन निकाला। सॉल्यूशन के बाद जो हमने 2 सब्स्टिट्यूट की हुई थी उन हमने रीसब्स्टिट्यूट करके वो वैल्यूज जो हैं वो इनिशियल वेरिएबल्स हम वापस लेते हैं। तो व्यूअर्स, आज हमारे पास है टाइप नंबर 4 और ये इंतहाई आसान है। टाइटल आपके सामने लिखा हुआ है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये हमारे पास है टाइप नंबर 4। टाइप 4 ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन ये क्या होती है, हमें कैसे पता चलेगा कि ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसके लिए हमें देखना पड़ेगा। A differential equation of the form m of xy dx plus n of xy dy is equal to 0। इस टाइप की जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, अगर ये एक कंडीशन है, वो कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो फिर एग्जैक्ट होगी। तो अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म m ऑफ xy, ये xy का फंक्शन, xy दोनों वेरिएबल हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, बाकी पॉसिबल ना हो। सेम इज द केस विद दिस वन। ये n जो है ये xy का फंक्शन है, यानी dx के साथ भी xy का फंक्शन है, dy के साथ भी xy का फंक्शन है। इस टाइप की जो डिफरेंशियल इक्वेशन है is called exact differential equation if ये कंडीशन थी। वो कंडीशन क्या है? वो कंडीशन हमारे पास है पार्शियल m ओवर पार्शियल y is equal to partial n over partial x, mean to say that if the partial derivative of m with respect to y is equal to the partial derivative of n with respect to x, then this differential equation, this specific differential equation is called an exact differential equation। ठीक है भैया, तो gx के साथ जो लिखा हुआ है उसे आप m का नाम दोगे और उसका पार्शियल डेरिवेटिव आपको लेना है विद रिस्पेक्ट टू y, और जो dy के साथ लिखा हुआ है उसका नाम आप n दे दोगे, आप उसका पार्शियल डेरिवेटिव लोगे विद रिस्पेक्ट टू x। और अगर ये दोनों आंसर सेम आ जाते हैं तो फिर ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है दैट मस्ट बी एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन।
Now, method to solve. इसका मैं आपको शॉर्टेस्ट वे बताता हूँ कि किस तरह से आपने इसको सॉल्व करना। शॉर्टेस्ट, if this one is an exact differential equation, then simply if one is an exact differential equation, then no substitution required at all. You can write the solution directly as then solution is m of xy dx integral of m dx. m का आपने इंटेग्रल ले लेना है विद रिस्पेक्ट टू x प्लस terms of n means nxy, but independent of x dy is equal to c. What is meant by this one? Here you will take the integral of m. What is m? M is the coefficient of dx. Take the integral of m with respect to x, and the integral of only those terms of n which are independent of x, mean to say that the terms which does not involve x at all. अगर x involve किसी टर्म में हो रहा है तो वो आप नेग्लेक्ट कर दीजिए। आपने सिर्फ उन टर्म्स का इंटेग्रल लेना है जिनमें x नहीं है। अगर x किसी टर्म में आएगा वो सारी की सारी टर्म आप नेग्लेक्ट कर देंगे, ओमिट हो जाएगी, डन। और उसकी इंटीग्रेशन आप लेनी है विद रिस्पेक्ट टू। सो the sum of these two integrals will give you the solution of the exact differential. Very simple, most simple solution of the exact differential equation is can be found in this. Now, for the application of this type, we need to say the application of exact differential equation. Look at exercise 9.4 and question number 1. So, what is that question number 1? Question number 1. Yes, that is 3x square plus 4xy dx plus 2x square plus 2y dy is equal to 0. Now, this is our differential equation which is going to be solved. So, to check that whether this belongs to type 4 or not, solution. The coefficient of dx is this one. So, this must be naming as m. Simply you can say mxy or simply you can say that m. So, m is dx square plus 4xy and n is 2x square plus 2y. The coefficient of dx is m and the coefficient of dy is n. Simple. Now, to check whether this is exact or not, you have to take the partial derivative of m with respect to y and partial derivative of n with respect to x. So, partial m upon partial y must be equal to partial over partial y of dx square plus 4xy. Okay, viewers. So, whenever we will take the partial derivative with respect to any variable, then that specific variable is just variable. All the other variables just like behave just like constant. So mean to say, so here we are taking the derivative of m with respect to y, and the derivative is partial derivative. So we are dealing with the derivative
derivative with respect to y, and the derivative is partial. So except y, all the variables just behave like a constant. So the partial derivative of this one with respect to y, v is constant, and x with respect to y is also constant. So the derivative of 3x square must be 0 plus 4x, just like constant. So 4x will stay outside and the derivative of y will be 1. Means to say we have 4x as the partial derivative of m with respect to y. Similarly, 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 we have to take the partial derivative of n with respect to x according to check whether this differential equation belongs to exact or not. So you have to take the partial derivative with respect to x. So x is variable, just all the others are just like constant. So the 2 as it is, the derivative of x square is 2x plus the derivative of 2y will be 0 because y is constant with respect to x. So this must be 4x. Now, here you can see that the partial derivative of m with respect to y, you can say that this is m1 simply, and here is nx. My stands for partial derivative of m with respect to y, and nx stands for partial derivative with respect to x. We just make just amendment on my is equal to nx. This is exact according to the definition of mathematics. Mathematics has a definition that mathematics is an education of simplification. So make the things simple where these can. So here we have the partial derivative of m with respect to y as 4x, and also the partial derivative of m with respect to x as 4x. So we can write as since my is equal to nx, so the given differential equation just like name that as differential equation number 1. So differential equation 1 is an exact differential equation. So here you have seen that according to the rule of the exact differential equation, we have seen that my and nx are same. So the given differential equation is exact. So solution is, so what is the formula to find the solution of the exact differential equation? That is m dx plus terms of n but independent of x dy is equal to c. Okay, viewers. So put the value of m. The value of m is the value of m is 3x square plus 4xy. 3x square plus 4xy. The integral of this one with respect to x plus terms of n. Here is n. N has two terms. The first one is 2x square and the second one is 2y. But we need to have that only the terms involving x and y only. The terms involving x must be omitted. So इसमें से हम सिर्फ b टर्म्स लेंगे जिनमें y आ रहा है. तो इसमें देखिएगा व्यूअर्स, इस टर्म में x आ रहा है तो ये ओमिट हो जाएगी और ये हमारे पास है 2y dy is equal to c. सो इसकी आप इंटीग्रेशन में 3 कांस्टेंट है बाहर रहेगा और x स्क्वायर की इंटीग्रेशन हो जाएगी x क्यूब अपॉन 3 प्लस 4 कांस्टेंट बाहर रहेगा और x की इंटीग्रेशन हो जाएगी x स्क्वायर अपॉन 2
प्लस 2 बाहर रहेगा और y की इंटीग्रेशन हो जाएगी वाई स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू सी। तो व्यूअर्स यहाँ पे देखिएगा 3 will cut 3, 2 will cut 4 to make it 2 and 2 will cut 2. So we have x cube plus 2x square plus y square is equal to c as your final solution of this given differential equation. So how much simple these questions are of type 2? I am going to repeat. Here हमारे पास है डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको हमने चेक करना चाहा एग्जैक्ट के लिए, तो dx के साथ जो लिखा है वो m की वैल्यू है, जो dy के साथ लिखा है वो n की वैल्यू है, n का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y 4x है और n का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x जो है वो 4x, दोनों सेम है। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन ये हमारे पास एग्जैक्ट है। तो इसका सॉल्यूशन निकालने का तो और भी सिंपल मेथड है कि n को इंटीग्रेट करें विद रिस्पेक्ट टू x और n की उन टर्म्स को आप इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, इनमें x नहीं है। सो m में हमने देखा इसको तो हमने डायरेक्ट इंटीग्रेट करना है और n में दो टर्म्स है, एक में x आ रहा है तो वो हमने नहीं लिखी इंटीग्रेशन में, और तो इसमें x नहीं है तो सिर्फ इसको आगे सिंपल इंटीग्रेशन है, बेसिक रूल्स है इंटीग्रेशन के। तो इंटीग्रेशन के बाद आपने इसे सिंपलीफाई किया। तो दिस इज योर फाइनल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। नाउ इसी को हम आगे बढ़ाते हैं, एक दो क्वेश्चंस और हम सॉल्व करते हैं। तो एक्सरसाइज 9.4 का पहला क्वेश्चन अभी मैंने देखा आप लोगों के सामने, तो कितना आसान है, बहुत सिंपल है। आगे मैंने जो चूज किया है इसका क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। Question number. So what is the statement of this question? That is 2xy plus y minus tan y dx plus x square minus x tan square y plus secant square y dy is equal to 0. This is our given differential equation. तो भैया सिंपली dx के साथ जो लिखा है इसके सॉल्यूशन में अगर हम जाएं तो यहाँ पे आप देखिएगा n की जो वैल्यू है वो हमारे पास 2xy plus y minus tan y, and the value of n is x square minus x tan square y plus secant square. So according to rule we have to take the partial derivative of m with respect to y. We need to say my is equal to the partial derivative partial over partial y of 2xy plus y minus tan y. We are taking derivative with respect to y, so 2x will stay outside, the derivative of y will be 1 minus the derivative of y with respect to y must be 1 minus the derivative of tan y with respect to y must be secant square. So this is your final derivative. We have to say 2x plus 1 minus secant square. Same is the case with the partial derivative of n with respect to x. We need to say and x is the partial derivative of x square is 2x minus the partial derivative of this one. So tan square y will behave just like a constant. So we will stay outside tan square y and the derivative of x must be 1 plus the derivative of secant square y must be 0.
I think the statement of this question is a bit wrong on my notes. 2xy plus y minus 10y and n is xk minus x times ky plus cx. Yes, I'm repeating this question. I have a bit problem in the statement of the question. I'm going to make that correct. That question is question number 4. I'm going to take question number 4. That is dy upon dx is minus ax plus hy upon hx plus by. So here this is question number 4. In question number 2, we have seen that a big problem in the statement of the question. So we have neglected that question. I will solve that question later. Look at this question number 4. Solution. So to check whether this differential equation is exact or not, we have to reshape this question as hx plus by will be multiplied by dx, mean to say hx plus by times dy is minus and dx will be multiplied by this factor, mean to say ax plus hy times dx. So this must be added on the left hand side. That is ax plus hy times dx plus hx plus by times dy is 0. Now we have reshaped this question to check whether this differential equation is exact or not. So here you can check. Here the value of m is ax plus hy and the value of n is hx plus by. So according to rule, to check the exact differential equation, we have to take the partial derivative of m with respect to y. So this term is constant with respect to y, so its derivative will be 0 plus h will stay outside the derivative of y with respect to y is 1, so h is 1 of partial derivative of m with respect to y. Similarly, need to find partial derivative of n with respect to x. So nx must be equal to h will stay outside the derivative of x will be 1 and the partial derivative of by with respect to x must be 0. So this is also x. So you can see that my equals to nx. So the same thing, since my is equal to nx, so given differential equation 1 is exact. So
If the given differential equation is exact, so solution is m dx plus terms of n but independent of x dy is equal to c. So we will put the values. The value of m is ax plus hy. Ax plus hy, integral of this one with respect to x, plus terms of n independent of x. Here is n. The terms independent of x is just this one. Dy is equal to c. So whereas from here you can take a outside the integral sign, integration of x must be x square upon 2 plus h and y both are constants with respect to x. So this must be hy times the integration of 1 is x plus we will stay outside the integral of y is y square upon 2 is equal to c. So you can see that we have 2 in the numerator there and there also. So 2 can be taken as LCM and just multiply this LCM on both sides. So we have ax square plus 2hxy plus by square is equal to 2c. And 2 is a constant and 2 also c also constant. So the product of two constants will be another constant. So this is your final solution of this given differential equation. So viewers देखिएगा हमें जो अब डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की शेप में नहीं है, हमने इसे रीशेप किया dy वाली टर्म्स और dx वाली इनको इकट्ठा करके मैंने m dx प्लस m dy फॉर्म में लिया। अब यहाँ ये m की वैल्यू है क्लियरली, ये m की वैल्यू है, m का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y और n का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x दोनों सेम है, इसका मतलब ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। अगर ये एग्जैक्ट है तो इसका फिर फॉर्मूला हमारे पास सिंपल है m की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x और n उन टर्म्स के इंटीग्रेशन जिनमें x नहीं है, तो उसको सिंपली इंटीग्रेट कर दिया और सिंपल तो यहाँ पे 2 LCM था, दोनों साइड से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे कांस्टेंट इनटू कांस्टेंट एक और कांस्टेंट और उसे हमने सी प्राइम, ठीक है। तो ये हमारा सॉल्यूशन है। तो ये आपने देखा एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत आसान है। ये हमारा एक्सरसाइज है 9.4 का पहला लेक्चर था। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में ये हमने फर्स्ट 5 क्वेश्चन देखे हैं, अगले लेक्चर में इंशाल्लाह हम तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा स्किप हुआ है, उसकी अमाउंट भी मैं रिगाइड करूँगा, उसे भी सॉल्व करेंगे और इंशाल्लाह हम आगे 6 से हमारे पास जो ऑनवर्ड क्वेश्चन 10 तक उन्हें हम देखेंगे, ठीक है। तो व्यूअर्स ये अपने लेक्चर्स उन लोगों तक लाजमी पहुँचाने हैं जो मैथ में अच्छा इंटरेस्ट रखते हैं, तो किसी वजह से एक्स्ट्रा कोचिंग क्लासेस नहीं दे पाते, मैथ्स में उनके इश्यूज़ हैं। मेरा इसके अलावा इंटर के लेक्चर्स अवेलेबल हैं, मेरे इसके अलावा जो एंट्री टेस्ट के लेक्चर्स हैं, बेसिक मैथ्स के मेरे लेक्चर्स अवेलेबल हैं। तो ये लाजमी कहूँगा मेरे चैनल को मैक्सिमम शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। खुश रहें, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।